आप सब जानते हैं कि 28 तारीख को उधमपुर में दो अलग अलग जगह पे बस में ब्लास्ट हुए थे। एक 28 की रात को लगभग 10:30 बजे और दूसरा 29 की अर्ली मॉर्निंग कोई 5:30 बजे के करीब। दोनों ही जगहों पे बस स्टैंड थे और जो रात को पार्किंग होती बसेस की, वहाँ पर बसेस उस वक्त लगाई गई थी। इत्फाकन ब्लास्ट के टाइम पे बस में सवारियाँ नहीं थी, मगर बगल में कुछ लोग एक दो जो बस में होते हैं उनको हल्की फुल्की लगी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि ये ब्लास्ट का केस बहुत ही कम समय में उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट तस्लीम की है, मानी है, और ये चीज़ें भी पता चली हैं कि ये ब्लास्ट जो किया गया उसमें जो आईडीज इस्तेमाल हुई वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसके कहने से आई। मैं थोड़ी सी तफसील जो स्पेसिफिक इस केस में है चाहूँगा कि एडिशनल डीजी जम्मू आपके साथ शेयर करें, और उसके बाद अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो उन सवालात का जवाब देंगे। छह महीने से ये देखा गया था कि आतंकी संगठन अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करके उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। इसी सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मॉड्यूल्स को पकड़ा गया था जिसमें पिछले उधमपुर ब्लास्ट के एक्यूज भी शामिल थे। इसी कड़ी में मोहम्मद अमीन भट्ट इलियास खुबैब, जो डोडा का रहने वाला है, इसने उधमपुर में पिछले ब्लास्ट में भी इसका हाथ था और अभी के ब्लास्ट में भी इसी आतंकी ने, जो कि पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है, वहाँ से इसने अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव किया, जिसमें असलम शेख नाम का आतंकी जो बसंतगढ़ उधमपुर का रहने वाला है, उसको इसने सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए कांटेक्ट किया और उसके बाद इसको 21 तारीख सितंबर को इसने कहा कि तुम्हें कोई सामान जो है मैं ड्रॉप करवाऊंगा ड्रोन के ज़रिए, उसको पिकअप करना है। 24 तारीख को 23 और 24 की दरमियानी रात को असलम शेख दयालचक के एरिया में आके खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज़ की कंसाइनमेंट पिक करता है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स और 4 दूसरे किस्म के नए किस्म के आईडीज़ उन्होंने भेजे थे। ये वो रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज़ फिक्स कर देना है। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहाँ के नज़दीक के बाथरूम में जाके 2 आईडीज़ को एक्टिवेट करता है। एक आईडी जिस बस में वो आया था, रामनगर में उतरा था, उस बस में लगाता है पीछे की तरफ, और दूसरा रामनगर के से जो उधमपुर गाड़ी आ रही थी उसमें लगाता है। 2 आईडीज़ ये लगाता है। इस पे तफसील से इंस्ट्रक्शंस पास किए गए थे खुबैब के द्वारा, जिसमें उसको बताया गया था आईडी को असेंबल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है। 6 किस्म के टाइमर्स उसको बताए गए थे कि 3.5 मिनट से लेके 14 घंटे की टाइमर
उसको जो स्विच अवेलेबल था उस पर 4-5 किस्म के वो ऑन ऑफ स्विच थे, उसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जरिए ये अलग अलग किस्म की टाइमर्स को एक्टिवेट कर सकता था। तो इसने दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में 7 घंटे की टाइमर और एक गाड़ी में 14 घंटे की टाइमर लगाई और उसको वहां रखने के बाद ये वापस बसंतगढ़ चला गया। उधमपुर पुलिस ने अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करके 4-5 संदिग्ध लोगों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें एक ये भी शामिल था, और इसकी पूछताछ पे इसने अपने सारे जो कारनामे किए हैं उसका खुलासा किया। इसकी शिनाख्त पे 5 जो बची हुई आईडीज थी वो बरामद कर ली गई, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब है, 2 और उसी किस्म के आईडीज थे जो कि वहाँ पे उधमपुर में लगाए गए थे। इन सब को यहाँ डिस्प्ले पे रखा गया है और आप इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी मॉड्यूल से एक और जैश का मॉड्यूल जुड़ा हुआ था जो कठुआ बेस्ड था, जिसमें जाकिर हुसैन नाम का शख्स, उसको गिरफ्तार किया, मल्हार का रहने वाला है, और उसको फरीद नाम के आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी था, 10-12 साल जेल काट के वापस पाकिस्तान गया था, वहाँ से इसने इसको एक्टिवेट किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसकी शिनाख्त पे एक स्टिकी बॉम्ब बरामद किया गया है। तो 2 जो मॉड्यूल्स थे, एक जैश का और एक लश्कर का, ये इस ऑपरेशन के जरिए इनको काबू कर लिया गया है और अब इस पे जैसे जैसे तफ्तीश चलेगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बेहद शर्मनाक बात है कि जो पाक नवाज फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो जम्मू के अमन के माहौल को ख़राब करने के लिए, और ख़ास तौर पे जब जब जहाँ पर कोई हाई लेवल विजिट हुआ तो इस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें की। आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट जब हुआ था तब जैश के 2 फदाइन जहाँ पर जम्मू शहर में आके ठिकाना बनाए बैठे थे ताकि उस विजिट के साथ साथ कोई बड़ी कार्रवाई करें, मगर उस वक़्त भी ये अच्छा हुआ कि पुलिस की सतर्कता के रहते टाइम सिर्फ पता चला और उन दोनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया और जैश का बहुत बड़ा मॉड्यूल जो था उसको ध्वस्त किया गया। इस बार भी ये लश्कर का मॉड्यूल है, बेसिकली असलम शेख लश्कर के साथ वाबस्ता है। 2005 में ये एक्टिव आतंकी होता था और बिलावर के केस में गिरफ्तार हुआ था जिसमें इसको सजा हुई थी और थोड़ा ही अरसा पहले जेल से शूट करके ये वापस आया था। और जेल से छूटने के बाद ही ये पाकिस्तान में बैठे अमीन के खुबैब जिसको कहते हैं उसके कांटेक्ट में आया और इसको ये कार्रवाई दी गई कि इस वक्त जो बड़ा एक विजिट दिल्ली से प्लान हो रहा है उसके पहले कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, और उसको जगह भी दी गई कि उधमपुर में जहां पहले किया था उसी जगह पर इस तरह के फिर से 2 बड़े धमाके जो हैं उनको अंजाम दिया जाए। मगर अच्छी बात है कि ये भी पुलिस ने बड़ा कम टाइम के अंदर इस केस को पूरे को एक्सपोज किया, इस बंदे को आइडेंटिफाई किया, इसको पकड़ा, पूछताछ की, जिसके दौरान इसने सारा कुछ मान लिया है। पॉसिबल था कि अभी भी इसके पास आईडी और अवेलेबल थी, अभी 5 आईडी और इसके पास अवेलेबल थी, और अगर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता तो हो सकता था कि और भी इस तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ ये 2-3 दिन के अंदर जो हो जाती। और इसके साथ ही दूसरा केस जिसका जिक्र एडिशन डी साहब ने किया, जो बी बिलावर का रहने वाला लड़का है और वो जैश के साथ कॉन्टेक्टेड है, उसको भी उसी एरिया में, बॉर्डर के एरिया में आईडी जो है वो फराहम की गई ताकि वो भी को फर्दर उसको आतंकी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करे। मगर अच्छा हुआ कि उस केस में भी वो आईडी पहले ही बरामद हो चुकी है और वो लड़का पकड़ा जा चुका है। इस तरह की साजिशें जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कह कर के लश्कर या जैश के मॉड्यूल्स के थ्रू जम्मू के आसपास के एरिया में, जम्मू, उधमपुर, कटरा, राजौरी, पुंछ, जो पिछले जितने भी इंसिडेंट हुए, आप सबको पता है कि लगभग तमाम इंसिडेंट्स को पूरी तरह वर्कआउट कर लिया गया है। पहले भी जो तालिब हुसैन का जो मॉड्यूल था, एक वो बड़ा मतलब समझ लीजिए कि पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो आपकी जम्मू प्रोविंस की बनती है, रामबन तक, राजौरी, पुंछ की, उधमपुर की, सब जगह पे उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद भी एक बड़ा मॉड्यूल जो
जम्मू में बैठ करके जम्मू से ही चल रहा था, वो मॉड्यूल भी बस्ट किया गया। और अब ये तीसरा मॉड्यूल जो बड़े लेवल का, और चौथा वो जो फदाइन अटैक के लिए लोग आए थे। इस तरह की नकलो हरकत बार बार जहाँ पर होती है, ड्रोन का इस्तेमाल होता है और ड्रोन के जरिए से आईडी, रेडीमेड आईडी और वेपन जहाँ पर भेजे जाते हैं ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ जम्मू के खित्ते में उनको एक्टिवेट किया जा सके। और इसके साथ ही कुछ सामान जहाँ से कश्मीर की घाटी में भी पहुँचाया जाता ताकि वहाँ के आतंकी जो वहाँ पर जो दहशतगर्द एक्टिव है उनको सामान पहुँच सके। सो ये वाक़या में शर्मनाक वाक़ा है और इस तरह के वाक़ात के ऊपर पुलिस ने बड़ा जल्द काम किया है। मैं अपनी पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसमें एडीजी साहब, इनके साथ डीआईजी, एसएसपी और नीचे जो टीम खासतौर पे एसडीपीओ जो इलाके के हैं उनकी टीम ने बहुत अच्छे से तफ्तीश करी और इस केस को पूरे को निकाला है। डीजी साहब, आज पुलवामा में भी एक आतंकी हमला हुआ है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगभग 4 कामयाब ऑपरेशन कश्मीर घाटी के अंदर कर चुके हैं। उसमें जैश के, लश्कर के दहशतगर्द जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया है। ये जो अभी आज की घटना हुई, इसमें उस वक़्त हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर एक नाका की इंस्पेक्शन के लिए, एक जो सीआरपी और पुलिस का नाका था वहाँ पर पहुँचे थे और किसी गली की तरफ से उस वक़्त फायर आया जिसमें जावेद अहमद डार नाम के एसपीओ हमारे जो हैं वो शहीद हुए। हम लोग पहचान लगभग कर चुके हैं, उसमें पता चल चुका है कि क्या है, अभी शेयर करेंगे, मगर उसके लिए ऑपरेशन जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसको भी ख़त्म करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसका ताल्लुक भी वीआईपी विजिट को लेकर के ही हो, क्योंकि इस तरह की करतूतें जैसे मैंने पहले कहा कि वो करते हैं जब भी ऐसा विजिट होता है, पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ जोड़ करके इस इंसिडेंट को देखा जाए। So can we say that DG, this Home Minister visit was on terror radar, and what is terrorists trying to achieve by carrying out these attacks? देखिए, what I feel is we all know that there's a very, very drastic change in the overall security situation in the duty. That is borne out by the facts and figures. That is nobody's claim that it has happened on its own. A very large number of successful operations have been conducted. While carrying out CT ops, we have tried to keep our people safe, their property safe. People are with us. By and large, people are with us. We have also tried to hit the terror ecosystem on various fronts. As a result of which, overall security scenario is much better. Today, you do not have the kind of situation which prevailed there 3-4 years back. So therefore, to show that the VIP visits or any such activity which sends a positive signal to the people, positive message to the people, the terrorists and their handlers across would like to show that all is not well. We know that there are still some terrorists left. Our operations are on and we would be able to take care of them. Because he is here to launch several development projects, can we say that Pakistan is enemy of development, can't see the smile on the faces of people they are trying to target? Absolutely, you are right. Pakistan is an enemy of development, is a lover of destruction. That is what they have done for the last 30 years, over 30 years. They won't like any developmental activity to happen. They won't like people to heave a sigh of relief and lead a normal life. So definitely Pakistan and its agencies have been ensuring that the valley remains not in peace but in disturbance. But now that things are better, things are improving every day. So therefore, sir, definitely I would say that that is the purpose behind this kind of acts. That in this case also, in the Udhampur twin blast case also, weapons were smuggled through drones. So it's a huge challenge for the security agencies. We understand that many steps have been taken to counter the drone menace. Sir, what else will be done? Because time and again we have seen that weapons are being transported and even drugs are being smuggled to ruin the future of youth of Jammu and Kashmir. What are the steps being taken to counter this threat? See, the one thing that has been very, very favorable to us is that we have got a lot of int available with our police and our intelligencies working here. And that is why we've been able to successful to bust so many modules who are indulging in weapon smuggling through the use of drone. One single case, over 30 sorties were received by a particular person, and that case, that module was busted.
Similarly, most of the sorties which were planned to carry out terror attacks, ready-made IDs were sent from across. Police and the security forces and the intelligences and information, we were able to intercept most of them. I think as a technology, we are working to ensure that we have better countermeasures on ground, but as of now, whatever has been done in terms of surveillance devices that we have and our human int and other technical int, we've been able to thwart most of their attempts. We would like to do more in this regard and we are working on it. Sir, yesterday the Jammu and Kashmir police and the Punjab police carried out an operation in Poonch wherein a drug racket was busted. Sir, we have seen in the recent past that there are attempts being made to revive terrorism in Punjab. So have you been able to find any connection between Khalistani terrorists and the terrorists operating in Jammu and Kashmir so far, sir? Would you like to comment on this Khalistani terrorists and JK terrorists? So far, during investigation of any case, there is no definite link of Khalistani terrorists with the terrorists operating here. But yes, there are intelligence inputs which indicate a possibility towards that, and we are investigating that aspect. Terror funding part, definitely there is a very strong link between what has been happening in Punjab and what is happening in JK. Most of our terror organizations, terror outfits were getting funding from the narco trade that happens via Punjab as well. So that kind of connection between the operatives in Punjab and operatives in J&K has been seen. But generally the handlers across in Pakistan seem to be common in both the cases. They are the ones who control the operations in Punjab and this side, but there is no direct linkage as of now, which has come in any of our investigations. Sir, in the morning, one terrorist was killed in Shopian, LED. Yeah, the terrorists, couple of days back, we had launched another operation in Shopian. This fellow was able to escape that day, and today we again had hint about him, and that operation was successful. Shopian police launched an operation, and they've been able to eliminate him. So that guy belongs to Lashkar-e-Toba, and he's a local militant from that area. Sir, ex-militant की बात की आपने. Apart from sticky bomb, what are the new kind of IEDs recovered from that terrorist? कहेंगे? There are three types of sticky bombs which have been recovered. Sticky bomb is basically a bomb which has a magnet. So there are three kinds of such bombs which have been recovered so far, from small to big. Apart from this, there are some other new types of bombs which have been used this time, and the details of it which will be given to you just after the press. You can see it yourself. The shape and kind is available. That would be on display outside. सर एक सवाल एक्स मिलिटेंट्स पे आपने कहा कि इसमें भी एक्स मिलिटेंट जो है वो इन्वॉल्व है. तालिब हुसैन के टाइम पे भी हमने देखा था कि एक्स मिलिटेंट भी इन्वॉल्व था. ठीक है, उसका वो काफ़ी टाइम से ठेकेदार भी था. और एक्स मिलिटेंट्स को लेकर किस तरह से अब आपकी जो नीति है, क्योंकि एक्स मिलिटेंट्स हम देख रहे हैं कि वो फिर से बड़ा एक्टिव हो रहे हैं. और जम्मू प्रोविंस की बात करें, वो काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं. उसको लेकर पुलिस जो है वो किस तरह से इस पर मतलब कर रही है. ये सिर्फ जम्मू प्रोविंस का ही मसला नहीं है. जो एक्स मिलिटेंट है, इवन इन कश्मीर मैनी ऑफ देम became active, and there's so many examples of the people who became active again and again. Third time, fourth time they became active, and I'm happy that most of them stand eliminated. Jammu side, Kashmir side, both we are keeping an eye over such elements who were earlier into militancy and they are now released from jails after their conviction is over. We are watching them and we keep an eye over them, and definitely wherever such linkages come, we will take action. Can we say that surrender policy of the previous governments have failed? If you see the way they are getting recycled and being used for terrorism. I won't like to make a comment on this. सर स्टिकी बॉम्ब आप अभी भी मानते हैं कि स्टिकी बॉम्ब एक बहुत बड़ा खतरा है, और उससे निपटने के लिए पुलिस क्या कर रही है, और दूसरा क्या अभी ये जो स्टिकी बॉम्ब आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की साइड से ही मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं? Most of the sticky bomb supplies have come on behalf of or through Lashkar-e-Toba.
most of the incidents, terror incidents by use of these sticky bombs and all, which have taken place both in Jammu, Kashmir said also one incident in Kulgam had taken place, have again been claimed by and caused by Lashkar-e-Toba, and you know Lashkar-e-Toba is in any way being controlled by our agencies sitting in Pakistan. So therefore, sticky bomb is basically associated with one particular organization, and Jaish also up and down, sometimes their involvement in some cases also has been seen. Sticky bomb is definitely a serious threat because it's a ready-to-use kind of thing. You don't have to do much. It's very easy to handle. Even a very normal person who's been given directions from across, even on cell phone, would be able to make use of it. Even in this case, I was seeing a video wherein DIG Udhampur was interrogating this Aslam Sheikh, and he was telling how to assemble it. And it appeared as if that guy is absolutely perfect in assembling it, using it, and doing whatever way you want to adjust the timer here and there, whatever way you wish to use it. It is a threat, but good parties that we, in most of the cases, get advance information, advance int, and even if there is no int, our police sources and our databases do help us to lay our hands on the right people. सर वजह क्या मानते हैं आप? लगातार अगर जम्मू संभाग की बात करें, पीछे कुछ समय से आपने मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, सब मॉड्यूल्स में जो है पुराने आतंकी OGWs का नाम सामने आ रहा है। क्या वजह है पाकिस्तान अब इन OGWs पे या जो पहले आतंकी रह चुके हैं इन पे ज्यादा भरोसा कर रहा है? उसकी वजह यही है कि one would be sure, the handler would be sure that there is some linkage between the person sitting in Pakistan. After all, a person sitting in Pakistan was once upon a time a terrorist and operating in Kashmir. Most of them have been operating in Jammu and Kashmir. They have old association with most of these people who are now in the jails. And one way or the other, they try to get in touch. They try to get in touch with, and they establish communication with them. In this particular case also, same has happened. So therefore, they know them. They have certain amount of faith in them. They get in touch with them. They give them some task. And when they feel that that guy is able to perform the task, they certainly would give him second, third, or whatever, till whatever time he could perform their assigned tasks and all. So that is precisely the reason why they rely more on the persons who have got terrorist background. But it's not that every time they have used these guys only. On the contrary, in Kashmir region, the new modules, the hybrid terrorists, they hardly have any record of terror activities in the past. So they come in touch and they become terrorists only when they go in for first activity of terrorism, they become terrorists. So they hardly have any past record. So it's both way. You also make use of the guys who've been in touch with you, old associates sitting in jail or outside the jail now, and also the new ones who are fallible, who are of impressionable age, who can easily become prey to your machinations. So therefore, that is how they carry it. सर पिछले कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट देखे जाए, कुछ लेडीज की इन्वॉल्वमेंट उसमें पाई गई। हाल ही में पुंछ में भी मामला सामने आया एक दो दिन पहले, तो ये कितना चैलेंजिंग मामला है? लेडीज की इन्वॉल्वमेंट नार्को ट्रेड में तो काफ़ी केसेस में कॉमन है, क्योंकि इट बिकम्स ईजियर टू टेक कवर इफ़ यू गॉट अ लेडी ट्रैवलिंग विद यू इन अ व्हीकल। मिलिटेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेडीज़ की नहीं है, और जहाँ जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट आई है, वी डू नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन वेदर इट्स अ लेडी और अ मैन. So therefore, the law is equal for both of them, but it's not a very serious threat that many ladies are involved in terror crime. One last question, sir. As you said, by carrying out these attacks, they were trying to make their presence felt, and they were trying to convey a message all is not well. As a police chief, what will be your message to the Pakistan and Pak proxies that in such cases? I would say that death in destruction has not done good to anybody, least to the Kashmiris and the persons who've been one way or the other fallen prey to Pak machinations and the agencies motivating people and young minds, recruiting them into terror ranks. So therefore, I would say this is high time that one should mend his own house. There is so much happening in our neighborhood also. So therefore, better would be to take care of the issues and the problems that you have in your house,
rather than disturbing somebody else's house. ड्रोन से बार बार वेपन गिराए जा रहे हैं सर, बॉडी स्कैनर कितना इंपॉर्टेंट है जम्मू श्रीनगर हाईवे पर क्यों डिले हो रहा है बार बार इस पर? देखिए, ड्रोन जो होती है वो सड़क से नहीं आती है, वो हवा से आती है। आते हैं हाईवे पे, क्या उसकी बात करें? देखिए, फुल बॉडी स्कैनर एक अलग टॉपिक है। द काइंड ऑफ लोड एंड द ट्रांसपोर्टेशन दैट वी हैव, ये कहना कि फुल बॉडी स्कैनर ही पनेशिया है और उसी से हर चीज़ हल हो जाएगी। The amount of load on the traffic load on the highway is huge. So even if you have one, maybe that it may not be 100% effective with regard to detection of weapons and all. But there's a committee which is working on that. So therefore, committee has its own findings. I won't be able to comment on that as of now. Sir, you said that Mohammed Amin Bhatt was trying to revive his contacts here in various parts of Jammu region. So do we have any specific number that how many such old terrorists, ex-terrorists have been activated again? Because there were regions in Jammu region which were once terror affected, which have become terror free now. So how serious is this? See, I would say that most of our areas are still terror free. There is no terrorist presence in most of our districts. It's off and on that some module is activated, and that activated module carries on certain acts and subsequently gets busted, gets caught, and faces legal action at the hands of police. So I would say they are trying to have some presence of terror activities in Jammu region, but police and security forces are active. They are taking required precautions and required actions at their end. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.